Vishal Jain here from Bangalore Agromatic Foods Private Limited. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Yeah, fine. I follow a lot you on LinkedIn, and your posts are always very much insightful. So, I was basically a businessman from paper industry, manufacturing thermal paper roll. लेकिन my major clients were retail sector and group like Perfect Cafe Day, and in pandemic my business was totally affected. So I started a private limited company and started with spices. But I found that spices is very oversaturated market. So entering into food industry, I got opportunity to learn about plant-based protein industry. Alt protein बोल दीजिए या प्लांट बेस्ड प्रोटीन या मॉक मीट जिसमें भी इम्पॉसिबल बर्गर बियॉन्ड मीट और इंडिया से भी इमेजिन और काफी सारे प्लेयर आ गए हैं. So I started working hard on R&D and all. We made a team, and finally we cracked down. And our pilot product is getting ready this month. And we have taken 1 acre land at government approved food park. Means we are ready to go for a big scale thing. And our own investment from friends and family is about 3 crore in the business. But I have sent my pitch deck to you also. But we have sent a pitch deck to especially venture capitalists who are from the domain. Maybe it is Blue Horizon or Ahimsa Fund and other places. So most of the thing we are getting answer that we are into too early stage. So I can understand product is not launched yet, and this month we are going to launch for test marketing. So I really want to know at this stage where should I apply for fund and what ticket size should I keep, because capex investment is around 20 crore. Out of that 5 crore we are trying to get from government in form of grant from food processing industry, and something we are investing. But we are looking for investment around 2 million. So what should be the right channel? How should we approach and where should we approach? See, what happens is generally this much amount does not comes in one go. Second is this much amount does not happen from VCs directly. First, you need to raise funding from angel, right? VCs is a public money, right? So public money they have terms and conditions while they raise fund from people. They have or family offices. They cannot invest into extremely early stage, right? So there are in early stage itself there are 3 segments: very early, or concept stage, and early. So in case you are not into revenue stage, it's very difficult for you to raise even the angel funding, because that moment investors don't know how your market will be, or whether you are able to sell off your products or not. That's important. So you need to raise some funds. You can come to StartupLanes. We can raise say 50 lakh to 1 crore for you, so that you get VC ready, right? After that you can approach the VCs. VCs want you to see how you have deployed the pre-existing funding. That means 50 lakh or 1 crore that you raise from angels, and then you can approach the VCs, right? That will be the right time. And in case you are not into revenue stage, so you need to focus upon building some revenues, because without the revenue, angel investment also does not happen. There are exceptions, say a gaming is there, or something like into content, or something which is into networking, which is like WhatsApp or something. In that regard, any such kind of investment happens at a concept stage. That means without revenue, or at a traction stage without revenue. But generally when you have a product, it should sell. It should definitely sell, and then you should approach the investors for scaling up. Yeah, I have 2 questions then. You told revenue. So one thing that what kind of revenue and how much duration revenue generally they will look for. And second question, because this is the product, so the production has to be done, and a plant has to be installed, which is very costly. For that only we need funds.
But for initial stage, I have option that I can do outsource, manufacture, bring my brand and sell it. So the other option is available to me. Of course, margin may not be there. I will be doing with a third party, which is going to be little expensive. But in that case, also, what kind of traction I need to prove means in terms of amount and in terms of period. See, for installing the plant, the best route is to take the money from the bank, right? Angel investors or VCs will not be interested in investing into such kind of setup where you are investing into infrastructure. As per them, 85% of the money should go necessarily into customer acquisition. That means your sales and marketing expenses. If you are installing a plant, either you go for bank funding or you don't install the plant, you utilize somebody's existing plant. Because asset light is the model for startups, right? If Uber starts buying the taxis, then it will not work. Same goes with Oyo and Airbnb. If they start buying hotels, they will not be able to scale up that much. So you either can tie up with an existing plant for your manufacturing, you can have contract manufacturing initially, and later on you can install your plant as a backward integration, right? It should not be your core. You may set up a separate company for it, or you may just want to backward integrate in the same organization, but that you should do either from bank money or from your profit surplus, not from the investors fund, because investors generally are not at all interested in this. Now, as far as your second question is concerned, what about the revenue? So there is no hard and fast rule about the revenue. Investors just want to see how much you are able to sell. Suppose you are able to sell for 100, you are able to sell your product to 100 people in your local Bangalore pin code, right? And if you multiply this with the with the buyers all across India in different pin codes, then automatically the total potential sales will come, and whatever amount is required, investors will be happy to put in that. So you just have to do a pilot project, depict that this is selling and selling better than others, right? So either your product should be cheaper, right? Don't What exactly reality of the market is, quality product don't sell fast and don't sell more, right? But cheaper products sell faster and sell more. So the number of sales that will happen if you make a cheaper product, that will sell fast, and that is what investors, this is I'm sharing you the truth. Investors look for cheaper products, not the quality products, right? Which can sell fast. China is a very good example. So if Japan is there and China is there, investors will prefer investing into China instead of Japan, Correct. Got it. right? Okay. Yeah. So you told for the pre-angel investment or something for a ticket size of 50 to 1 CR, we can approach to you. So again, it is very tough to say how much time you will take because so many parameters will be depending. But generally, averagely, what is the time needed and how we can I'll approach you explain you the to entire start? process. Generally, it Yeah. takes less than a month, less than 30 days. And what we require is there are three documents that you will be needing: pitch deck, valuation, and projection. Your pitch deck is the document that depicts basics about the funding, right? And this is not a detailed document. This is a very light document, very less of text, more of the graphics. You just depict. This is a document which is a supportive document while you pitch in front of the investors, right? So one pitch deck is required. Your valuation is required. This is how you will find out how much equity you will give to the investor at what price, right? Then your financial projections, not the financial modeling. Most of the people approaching us are making this mistake. They are coming up with financial models, right? Investors are not at all interested in how much you will buy and for what price you will buy and how many units. No, they just want to find out what is your burn rate. Burn rate means every month there will be some shortfall of cash, right? Negative cash. So they just want to find out how much negative cash will be there. Say suppose every month on an average it will is 3 lakh rupees. So for next 10 months you require 30 lakhs. You should not ask for 50 lakhs. If you are having a runway, this is called runway, having a runway consideration of 10 months, then you should only ask for 30 lakhs. And then before this 30 lakhs gets finished, you should raise another round of funding, right? So maybe 8th month or 7th month you can start again the funding. Now I'll tell you the process how this works with StartupLanes.
we will be, the moment you come to us with all these three documents, if you don't have, you can utilize our service. It is a bit expensive, but in comparison to others, it is far cheaper. Okay. So we charge 75,000 for this entire pitch deck bundle that includes pitch deck, valuation, projection, right? In case you want to make it yourself, you can make it yourself. Come to us with that. We will give you a date for pitching. You have to mock pitch to our team. On the basis of that mock pitch, our team prepares a research report. Our financial team will prepare a research report for the investor so that they get the bird eye view. And then we ask you to make a promo video. Promo video is like, you will be creating a video asking investors why they should invest, what you are giving them. It's a 1 to 2 minute video or maximum 3 minutes. We do the editing, everything, and total charges for sign up is only 1,000 rupees. That is the legal fee we take. And after the funding, next we will be giving you a date of any Saturday, maybe second Saturday or third after you sign up. So within 3 weeks, we will be giving you a date which is called demo day. On the demo day, you have to be present, and 50-60 investors will be there on other side. They will hear to your pitch for 40-45 minutes. They will ask you questions for another 30-40 minutes. And thereafter, our team will ask them how much they are investing, right? You will get the commitment in next 4-5 days after the demo day, and the funding amount will reach your bank account in maximum 1 week. So that is the entire process. In between, we will be making the term sheet and shareholders agreement. You will be getting 2 months of time to allot the shares to the investors. So within this 2 months, either you raise another round of funding, that's also okay, or you allot the shares and then increase the valuation and raise another round of funding. So it's up to you. But necessarily you have to keep raising funds, else nobody will invest, because investors get exit, that is the profit, only when you raise the next round of funding. Correct. That is there in your StartupLanes pitch deck guidelines. Yeah. I gone through that, and we are trying to make one pitch deck. Maybe within a week it will be over. So on pitch deck only, I have one question: whether to have the product photo, image, everything, and then giving the pitch deck will be preferred, which may take 7 to 10 days, or with the idea if I give, that also works. Because I found that, because right now the product name and image is not there, maybe investor are having disconnect. Okay, अभी तो product ready नहीं है, it may take a lot of time, और 15 दिन या 10 दिन में when I am having the real product in my hand, उसके बाद पिछले क्लोज करूं, उसमें whichever is the better. सर मैं बताऊं आपको, आप इन्वेस्टर को आपके प्रोडक्ट से भी कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है. इन्वेस्टर को एक चीज चाहिए होती है, वो होती है DRI, राइट, और DRV, डॉलर रिटर्न वैल्यू, राइट. डॉलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या डॉलर रिटर्न ऑन वैल्यू बोलते हैं हम. कि आपके पास जैसे कोई आता है, आपका कोई जानने वाला, और वो बोलता है सर एशियन पेंट्स का शेयर खरीद लो, अभी 4,000 का है, 5,000 का हो जाएगा 6 महीने बाद, राइट. तो आप उसको खरीद लोगे. आपने ये भी नहीं देखा कि वो कंपनी क्या करती है. यू डोंट हैव टाइम, नोबडी हैज टाइम. हाँ, ऐसा इतना इजी भी नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर. नोबडी हैज टाइम, दे जस्ट लुक फॉर सिग्नल्स, राइट, कि भाई ये सिग्नल, तो उसमें वो कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं, जैसे CACs to LTV देखते हैं. आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है या कम है आपके पीयर्स को लेके, यानी आपके कंपैरिजन में आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सस्ते में कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हो. फिर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, एक कस्टमर से आप पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू. ठीक है, प्रॉफिट कोई नहीं देखता. ये लाइफ टाइम की लाइफ कितनी पकड़ते हैं, 5 साल, 10 साल, 3 साल? इधर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जैसे एक स्कूल में एग्जांपल समझाता हूँ. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी मतलब नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ. जैसे स्कूल है, नर्सरी में बच्चा आया तो 12 साल पढ़ाई करेगा, राइट. और अगर 11वीं में आया, 11th में आया तो 1 ही साल पढ़ाई करेगा, फिर चला जाएगा. तो जो 11th में आया उसकी लाइफ टाइम वैल्यू 1 ईयर है, और जो नर्सरी में आया उसकी 12 साल है. तो अगर नर्सरी के बच्चे पे मैं 50,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ उसको लाने में, तो भी मेरी वाइबिलिटी निकल आएगी. लेकिन 11वीं के बच्चे पे मैं 50,000 रुपए एक्विजिशन पे खर्चा नहीं कर सकता, राइट. तो माई लाइफ टाइम वैल्यू इफ इट इज हायर एंड CAC इज लोअर, दैट इज अ वेरी गुड प्रपोजिशन. तो ऐसे जहां पर ऐसा स्कूल जो नर्सरी में शुरू हुआ है ना, और उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 2,000 रुपए, और वो 5,000 बच्चे ला सकता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया प्रपोजल है.
दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। तो ये तो बहुत सिंपल करके समझाया, बट इन्वेस्टर्स करेक्ट। यही देखते हैं कि सीएसी कितनी है, आपके पीयर्स की कितनी है, आपका इन्फ्लुएंस कितना है कस्टमर के ऊपर, आपके पास कोई ऐसा एडवांटेज है क्या जो औरों पे नहीं है। जैसे किसी कोई बोलता है साहब मेरा तो मेरे चाचा जी एमपी हैं या मेरा भाई एमपी है और उस एरिया में तो सारी कंपनीज मेरे से खरीदेंगी। सो दिस इज अ अनफेयर एडवांटेज दैट यू हैव, एवरीबडी हैज। किसी पे प्राइस का होता है, किसी पे नॉलेज का होता है, किसी पे सप्लायर्स का होता है कि बोलता है मैं थर्ड जनरेशन हूँ, ये माल मुझे ही मिलता है। सो ऑल जैसे दीज मैं एक एग्जांपल दूं, वेदर इट इज वैलिड और नॉट, मैं वीगन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वेजिटेरियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद जैन हूँ, तो जैन इज अ हार्डकोर वेजिटेरियन कम्युनिटी। तो हमारे पास एक एसोसिएशन है जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं उसका मेंबर हूँ तो पूरे इंडिया के और वर्ल्ड के जैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवीजन ऑफ जैनिज्म, वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारे जैन ने ये प्रोडक्ट किया है तो उसको तो सपोर्ट करो। तो मैं इसको मेरा एक एडवांटेज पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट, मेरी कम्युनिटी इसको हाथों हाथ इंडोर्स करेगी, और एक मेरे को एक अच्छा कस्टमर बेस मिल सकता है। कैन आई टेक दिस एज ए स्ट्रेंथ? इज दिस द यस राइट यस यस, एग्जांपल? डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपके प्रोडक्ट में पूरे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं ना, वो आर, जरूरी नहीं है कि वेज और नॉन वेज को रिलीजन से ही जोड़ के देखा जाए। देर आर हाँ यू नो एज ऑफ नाउ नॉन वेज इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, सर, राइट। कल आई मैंने वाज रीडिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉग भी लिखा है, आपको शेयर करूंगा, प्लीज गिव द ओपिनियन ऑन दैट। तो वहां पे मैंने सबको ही एड्रेस किया है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई वॉज नॉन वेजिटेरियन, आई माई सेल्फ टर्न वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। हेल्थ इज वन ऑफ द रीजन, अनदर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बहुत नुकसान है जानवरों से आज की डेट में। तो दैट इज यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट। देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच, राइट। करेक्ट। सो पीपल वर्ल्ड अक्रॉस, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे हैव कंप्लीटेड बिकम वीगन। वो दूध भी नहीं ले रहे, वो मिल्क भी नहीं ले रहे, right? So that करेक्ट। this market is growing up. There is one person I know, uh, his company's name is Jackfruit 365, I guess. He was from Microsoft and he was some director in that company, very big level. He stopped, he resigned and he started Jackfruit company. So he has variety of jackfruits, only jackfruit, right? And he's selling all across the world vegan product. So this is growing up. अभी इसी महीने में प्रोवेज को 2.2 मिलियन की फंडिंग हुई है, गुडमिल को 1 मिलियन की फंडिंग हुई है, हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर आप एग्जिट करें, देखिए किसी और की फंडिंग हुई है आपके सेगमेंट में, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि आप, और प्रोडक्ट से भी नहीं है, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। इन्वेस्टर को प्रोडक्ट से भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इन्वेस्टर को बिजनेस मॉडल यानी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं चला पाते और उससे घटिया से घटिया प्रोडक्ट लोग चला जाते हैं और ज्यादा फंडिंग भी ले जाते हैं, स्केल अप भी कर जाते हैं। इट I इज have हाउ felt that MyGate is one of the big case. MyGate स्टार्टिंग में आया था, वो बहुत वर्स्ट था, उससे बढ़िया प्रोडक्ट अवेलेबल थे, बट MyGate की यूएसपी अच्छी थी, आज उनका प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हो गया है 4 साल के दौरान। तो होता क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे कि आपने देखा है ना, वो सोनी पे वो प्रोग्राम आता था सिंगर्स का, तो सिंगर्स तो बहुत पड़े हैं, पर वही सिंगर क्यों चले? बिकॉज वो फोकस में आ गए। तो ऐसे ही जब आप हमारे जैसे किसी एंजल नेटवर्क पे जाते हैं और आपको 20-25 लोग फंडिंग दे देते हैं, फोकस मिल जाता है, और फिर वीसी भी आ जाता है। जब ये चेन जुड़ी हुई है, फिर वीसी आता है, फिर पी आता है, फिर आईपीओ भी आपको अपने आप लोग इन्वेस्टर अप्रोच करेंगे, साहब आईपीओ करा लो। एंड दैट इज हाउ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट फेल होते देख लिए मैंने, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट। दैट इज वाई ओके। आई टोल्ड यू कि इन्वेस्टर को ना क्वालिटी नहीं चाहिए, उसको सस्ता प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो चाहिए। So I have Gyaneshwari number. I think I can talk to her and she can give me the link of this program so that I can share with my colleague in Singapore. प्लीज आप ना सर हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, वो इसकी तो डेफिनेटली कर लूंगा। तो वहां पर जरूर आ जाएगा। लॉट ऑफ कंटेंट वी आर मेकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। Definitely sir. Thanks a lot for your time and soon we will start की pitch deck मेरी बनी हुई है, उस पे करेंगे या आपसे बनाएंगे, we will discuss and do that. एक आखिरी क्वेश्चन जाते जाते रह गया, ऑफ कोर्स पहले भी आपके मुंह से सुना हुआ है, स्टिल आई वांट टू अंडरस्टैंड वंस मोर।
आप वैल्यूएशन कैसे पकड़ते हैं? सर ए टू जी वैल्यूएशन का मैंने अपना सिस्टम बनाया, क्योंकि जो पहले वाले सिस्टम थे वो कमजोर थे. So you can call me as an inventor of this system called fair share method. 10th मेथड है, 9 मेथड होते थे अभी तक, 10th आई हैव propounded और उसके लिए इंटरनेशनल पेपर डाले हैं, बुक भी लिख रहा हूँ, सेकंड वो जाएगी तो पब्लिश होगी. बट मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा. इसके अंदर ए टू जी ABCD में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ए टू जी 26 पैरामीटर्स बनाए हमने, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं. हम आपका सोशल मीडिया भी देखते हैं, रिव्यूज हम देखते हैं, आपका इन्फ्लुएंस क्या है या आप की क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है एज अ फाउंडर, यू नो. देन वी सी द मार्केट ग्रोथ रेट, बिकॉज कई बार मार्केट ग्रोथ, जैसे अभी पैंडेमिक आया था तो जो भी मास्क बना रहा है वो सब चल रहे थे, राइट. तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट या मार्केट का ग्रोथ रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी सारे वैल्यूएशन मेथड्स में नहीं आता था. फिर हम देखते हैं कि उसमें कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है. फिर डिसरप्शन देखते हैं कि साहब प्रोडक्ट आपका सेम है, आप सस्ता बेच पा रहे हो कि नहीं बेच पा रहे हो, बिकॉज जो सस्ता बेचेगा वो जीतेगा, राइट. फिर मार्केट कितनी ऑर्गेनाइज है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप मंडी मंडी घूमते रहोगे, उसी में सारा टाइम चला जाएगा. बट लाइक डिजिटल मार्केट, नो, जैसे कि आज की डेट में कोई वीडियो गेम बना लेते हैं आप, जो बढ़िया है, आपने प्ले स्टोर पे डाला, पूरी दुनिया में फैल जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वी सी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ऐसे 26 मेथड्स हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट बहुत आसान बनाया हुआ हमने. इंटरनली 4 टीम बैठती हैं जो ये काम करती हैं, फाइनेंस में ही हमने डिविजन्स करे हुए हैं, एंड दे विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो. और सबसे अच्छी बात है कि हम ये वैल्यूएशन करीब 150 से ऊपर कर चुके हैं क्लाइंट्स की, 150 से ज्यादा. आज तक कभी भी इन्वेस्टर ने ये नहीं बोला कि ये वैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है या समझ नहीं आती.